राजेश सर, इस पे आपके व्यूज देना चाहूंगी कि आप हुमा मैम ने जितना बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि आपके हिसाब से ये कितना इम्पोर्टेंट है हर उस एस्पिरेंट के लिए, चाहे वो यूपीएससी बैकग्राउंड से के लिए तैयारी कर रहा हो या फिर दूसरे किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, बीट एंड नीट, आईआईटी, एसएससी, तो कितना इम्पोर्टेंट है, इसमें मैं आपके व्यूज लेना चाहूंगी। प्लीज अनम्यूट योर माइक। First of all, I would like to thank you, ma'am, for allowing me this opportunity to speak on that how mentorship should be. So I have written something in sequence, and I always want to put information in some logical sequence, because if the information is provided in the haphazard manner, then it makes no sense and it is not impactful. So I would start with that. We become what we practice every day. It is not like you wake up one day and you will start practicing positivity. So you will only have that kind of thoughts which you have practiced on a daily basis. So the first thing I would like to say that you are what you think, and you cannot think positively just in just a matter of time. So first of all, you have to practice positivity, and you have to avoid pessimism, and pessimism breeds pessimism, and positivity breeds positivity. Now, as far as the competitive exams are concerned, then I would say that hard work is the most important ingredient. Hard work is the key, and hard work always pays off. Either it rewards you with a win, either you win, or even if you lose, you become a fighter. And once you become a fighter, in the end, the man who wins is the fighter. So a fighter never loses. He may lose one or two battles, but ultimately he will win the war. And as far as the competitive exams, these are nothing, only a few ingredients are required, just like hard work. If you are having a logical approach, and if you are motivated, and if you are disciplined, if you can work for 7-8 hours, if you can study for 7-8 hours every day for a longer period of time, for 10-12 months, then you will eventually crack the competitive examinations. And obviously the one thing I am taking that it is there, if you are having it in you, then no one is going to stop you. If you are having some caliber to achieve something, then no one is going to achieve you. A mentor only channelizes your energy, as Huma ma'am has already said. A mentor only directs you that what should be done and what should not be done. The role of mentorship is to tell you that things that are not to be done. This is the most important role of mentorship. You cannot do some things, and we eventually guide you regarding this, that when you are moving along a path, there are certain things which you should never do, because a mentor knows the path. He once upon a time he has traveled through this path, so he can guide you through this path. So a mentor, he is channelizing your energy. And I would like to say that, for example, like in the case of JEE NEET examination, or even in case of UPSC, the syllabus is very vast. And since the syllabus is very vast, so we cannot read every portion of the syllabus in detail. There are certain portions of the syllabus which are very, very scoring. And we should look for the cost benefit analysis. Here the cost is time and benefit is the marks that you are scoring from any given portion. So if from some segment of the syllabus, the number of questions asked are very few, you cannot devote too much time on that portion. That portion which is being asked for more number of marks, you should devote most of your time towards that portion. So you should always look for this cost benefit kind of analysis. Okay, you cannot spend too much time, because time is a scarce resource. You are having only 1 or 2 years while you are preparing for these examinations. So you have to distribute your time judiciously. And who will tell you how to distribute your time? This thing only the mentor knows, because the mentor has gone through the same process earlier. Okay, he knows the journey of different student. He also has experience of his own journey, and he has seen so many students excelling through this path, and he has seen so many brilliant students who are not able to make it. So a mentor knows all these minor things which are required to achieve success. And there is one more thing. While you are in the preparation mode, you should not
take up the garbage content. Okay, what do I mean by the garbage content? Means you cannot, your neurons are limited. You can absorb only some limited information. So you should not fill your mind with garbage. So what you can do, you have to practice positivity, and we have to practice it. Otherwise, and we have to choose our peer group very wisely. We have to choose that peer group where we feel the positive vibe and where we can breed positivity. So in order to avoid negativity and in order to be positive always, what you can do, one suggestion that I will give, that you should look for the biographies of the great people. Like we are having Mahatma Gandhi, we are having Elon Musk, we are having Steve Jobs. So all these people, you can read the biographies of these people. Subhash Chandra Bose, you will feel inspired through their journeys. So we should not fill our mind with the garbage stuff. And there is one more thing. So in order to pass any examination, we need logic, we need discipline, we need hard work, we need motivation. So by the combination of all these things, and if you are having it in you, if you are good in science, if you are good in physics, chemistry, or maths, eventually you are going to crack IIT. The mentor can only do this much thing, that even if without the role of the mentor, you are having the caliber of 3000 rank, then with the right mentorship, you can get a rank below 1000. This is the role of mentorship. Now, as far as life is concerned, life is also a competitive exam. And in order to excel in this exam, the greatest attribute that you can ever have, that attribute is humility. So humility is that attribute, though it does not appear to be so powerful, but it is that attribute through which you can win in most of the situations. Okay, you just not have to pass the competitive examination. You also have to excel in life. You have to live a good quality of life. So in order to be able to do that, you should be humble in your attitude. And humility, I would say again that it is the greatest attribute. There is one more thing, the process of acquiring knowledge. When we acquire knowledge, suddenly we start to, I would say, with little knowledge comes the delusion of being enlightened. So when we gather some knowledge, this delusion comes that we are enlightened. But if you are having this attribute of humility, so if you are humble, if this attribute is with you, then it will protect you from the delusion as well. So humility, it also protects you from delusion, and it helps you to live a good quality of life. You will forge better relationships with people around you. You will forge better relationship with your friends, with your parents, and with the society at large. And eventually you will become a good citizen of the country. So I would say that we have to practice positivity. How you will practice it? You have to avoid the negative people. You have to choose your peer group wisely. And you have to think along certain loops. If you are a negative people, you must have seen that negative people, they are inclined to think along some particular loops. They are trapped in their negative loops. So what you can do, you and slowly and consciously, you can start practicing. But I have a question. Sorry for interrupting. Yes, sorry for interrupting. I have this question that having this vast syllabus or itna competition exam, how it is difficult for a very young aspirant, like you guys are mentors, so you know, you have been through that path, but for a very young aspirant, how important, yeah, how difficult it is to maintain that confidence or positivity, or you can say that what can be the method to be positive, like जैसे आप कह रहे हैं पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है, बट एक यंग माइंड के लिए डिस्ट्रैक्ट हो जाना या नेगेटिव हो जाना बहुत इजी होता है, you understand that कि but उसको पॉजिटिव, वी ऑलवेज से कि बी पॉजिटिव, बट एज अ मेंटर आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू कि थोड़ा सा वो मेथड बता दें जिससे कि एस्पिरेंट को लगे कि हाँ दीज आर द थिंग्स जिससे मुझे अपने आसपास पॉजिटिविटी रखनी ही चाहिए, because they are very young, if we talk about people for NEET and IIT especially. Yes, ma'am, you are absolutely correct regarding this. So how to stay positive, this is itself a very big task. So I would say that, as I have said earlier, that you have to go through the biographies of the great people. Okay, because at this tender age of 17, 18 years, we cannot, we have to treat them very cautiously.
So the one thing which the parents should do and which the students should do by themselves, they have to go through the biographies of these great people, because when they will learn that these people have gone through so many hardships, my hardship is nothing in front of the hardship that these people have faced. So this kind of learning, when the student is able to relate his life with the life of the great people, then in this manner his mind will think in certain, again I would say, in certain loops, and it will start breeding positivity. So it is very important to have this kind of peer group. Okay, for this reason the peer group is very important. Only by this method you can keep yourself motivated. You have to go through the life of these great people, and there is no doubt, there is no lack of these great people. There are so many inspiring people around us. We should look into their lives. We will learn a lot of things from their lives. And surely then after that, mentors like you are there. Yes, ma'am, absolutely. To help them to be positive. Yes, Huma. बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है जरीन मैम आपने, बहुत ही लाइक यू नो इट्स जस्ट लाइक एक्चुअली ये समझना ही बच्चों को बहुत जरूरी होता है कि पॉजिटिव रहे कैसे। हम सभी ये बोलते हैं कि पॉजिटिव रहो पॉजिटिव रहो, जैसे कि राजा सर ने बताया कि पीयर ग्रुप को चूज करना आपके लिए इंटेग्रल अप्रोच होना चाहिए। 110% मैं एग्री करती हूँ उनकी बात से, क्योंकि वो यू नो देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेइंग दैट शो मी योर फ्रेंड एंड आई विल शो योर कैरेक्टर। आपके जैसे फ्रेंड्स होते हैं वैसे आप समझ में आ सकता है कि आपका कैरेक्टर क्या है। तो राइटली आई एग्री विद हिम। एक और इस पे एक और अप्रोच है जिससे हम बहुत हद तक, काफी हद तक अपने आप को पॉजिटिव के साथ साथ किसी भी प्रॉब्लम से फाइट कर सकते हैं। वो ये दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट इट्स ऑल देयर इन आवर हेड। ये हमारे ब्रेन में है, ये हमारा माइंडसेट है। और माइंडसेट कैसे प्रैक्टिस होता है, जैसे कि राजू ने बताया, राजा सर ने बताया कि इट्स डेली प्रैक्टिस करना पड़ता है। तो हमें पॉजिटिव रहने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू थिंक दैट हमें एक हैबिट बनानी है जहां में हमें पॉजिटिव इस तरीके से सोचना है कि जो जैसे हमें ऑब्जर्वेंट बनना है, लाइक यू नो दैट वी हैव टू बिकम अ रियली वेरी गुड ऑब्जर्वेंट ऑफ आवर थॉट्स। कौन से थॉट्स हमारे दिमाग में बार बार आ रहे हैं। तो ये एक्चुअली 21 to 23 डेज का एक चैलेंज, एक प्रोसेस है। बहुत ही फेमस न्यूरोलॉजिस्ट हैं जॉय डिस्पेंजा, वो इस बारे में बात करते हैं। इन्होंने अपनी इस मेथड के साथ विदाउट एनी मेजर मेडिसिन एंड ऑल दैट कैंसर जैसी प्रॉब्लम्स को भी सॉर्ट आउट किया है। So he explained that we have to understand that our brain thinks in a pattern. There's a pattern, and as every sociologist would agree with this, and anthropologist too, that pattern never lies. एक इंसान का पैटर्न होता है, वो उस पे वो बिहेव करता रहता है। तो कई बारी क्या होता है, क्योंकि सोशलाइजेशन प्रोसेस में, एनकल्चरेशन प्रोसेस में हमारी लाइफ में बहुत सारे इवेंट्स होते हैं जो बचपन से ही होते हैं, जिसपे हमें लर्न करने की जरूरत नहीं है, वो सीख जाते हैं। तो वो न्यूरॉन्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं हमारे दिमाग में। लेकिन नाउ इट्स अ न्यूरोप्लास्टिसिटी। अब हम पहले लोगों का मानना था कि 5 साल तक 6 साल तक जो भी हमने हमारा थॉट प्रोसेस है वैसे ही रहता है, बट नो, नाउ वी डू अंडरस्टैंड दैट वी कैन चेंज आवर थॉट प्रोसेस विद कंटिन्यूअस एफर्ट्स। तो हमें वो एफर्ट्स करने पड़ते हैं। तो फॉर इंस्टेंस, जब हमें पहले तो एक्नॉलेज करना, वंस यू नो द प्रॉब्लम हाफ बैटल इज डन, वंस यू नो दैट यू हैव दिस इश्यूज, तभी वो हाफ बैटल आपका खत्म हो जाता है। तो सबसे पहले थॉट प्रोसेस को अपने आप को देखो। 21 to 20 डेज का एक, यू स्टार्ट विद 1 वीक। एस्पिरेंट्स शुड स्टार्ट विद 1 वीक। उसके लिए आप चाहे 14 साल के हैं, 15 साल के हैं। आई गॉट अ डॉटर ऑफ 10 years old. I tell her and she always work on this. You know, whenever she thinks that she has a problem or she has some negativity, she works on that. I ask her to write it down. So it is very much achievable, because if my daughter can do, and she has been doing this last 2-3 years, okay, so it's very much achievable. ऐसा नहीं है कि आपको अपने थॉट प्रोसेस नहीं पता है, बट वो आपको एज अ जर्नल रखना होता है। आप सोचिए, आप रोज एक टाइम बनाइए कि उसमें आपने पॉजिटिव कब सोचा, आपने नेगेटिव कब सोचा। पॉजिटिव सोचने के क्या रीजन थे, नेगेटिव सोचने के क्या रीजन थे। कई बार होता है कि हम अपने, और हमें जैसे कि इतने सारे
जैसे कि राजू ने बताया कि जितने भी अचीवर्स हैं लाइफ में, इतने सारे लोग हैं जिनसे फिलोसोफर्स हैं जिन्होंने इतना कुछ अचीव किया है, वो कोई भी हो सकता है. फॉर एग्जांपल फ्रीडम मूवमेंट में 13 years old शी वाज I think her name was Rani, was given by Pandit Jawaharlal Nehru. She was from a tribal community, or she fought for just to say कि भाई मुझे ब्रिटिश के अगेंस्ट लड़ना है. तो एज डजंट मैटर, विल मैटर. अगर हमारे पास विल है तो हम, when there is a will there are, I would say, 100 of ways. एक वेज नहीं, 100 of ways. तो अगर हमने ये डिसाइड कर लिया है कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हमें सेट करना है, तो पॉजिटिव रहने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप एनालाइज करिए थॉट प्रोसेस को. 15-20 दिन तक आप एक रोज एक हैबिट बनाइए. आप लिखिए कि आपके अंदर नेगेटिव पॉइंट्स क्यों आए हैं. अगर नेगेटिव पॉइंट्स आ रहे हैं, नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, तो उसका कोई रूट कॉज होगा. उस रूट कॉज को चैनलाइज करिए, ओपनली समझने की कोशिश करिए. उसके बाद अपने लाइफ में हैबिट्स इनकलकेट कीजिए, जहां पे आप सिर्फ स्टडीज और अपने आप को पर्क्स दीजिए. फॉर एग्जांपल आपने प्लान किया 2020 आपने कुछ स्मॉलर टेस्ट रखे कि हाँ ये सारे टेस्ट है, इतना सिलेबस मैंने कवर अप करना है, मैंने ये कवर अप करा है. उसके बाद गिव योरसेल्फ अ रिवॉर्ड. आप अपने आप को कोई भी पॉजिटिव रिवॉर्ड दीजिए, चाहे वो एक दिन का ब्रेक है, चाहे आपको कुछ खरीदना है, कुछ भी, वो आपको एक पॉजिटिव अपने आप पे करेगा. अब अपने आप को अप्रिशिएट करना सीखिए, क्योंकि अगर आप अपने आप से प्यार नहीं कर सकते, अपने एफर्ट्स को अप्रिशिएट नहीं कर सकते, तो वर्ल्ड इज लाइक देयर टू डिमीन यू. वहां पे तो आपको नहीं, मतलब आपको फिर कौन अप्रिशिएट करेगा. आप अपने खुद के रिस्पॉन्सिबल हैं. तो इस तरीके से हमें समझना चाहिए. और ये एक बहुत ही बेस्ट वे होता है कि जहां पे फिर लाइफ में चैलेंजेस आएंगे, क्योंकि लाइफ अपने आप में आपको बहुत कुछ चीजें सिखाती है. तो लाइफ में जब चैलेंजेस आएंगे, उसको प्रॉपर बिल्कुल ही खुले दिमाग से समझिए. आपकी कहाँ गलती है, दूसरे की कहाँ गलती है. अगर मैं ये प्रिपरेशन करना चाहता हूँ, तो मैं कितना ज्यादा समटाइम लोग सोचते हैं कि पेरेंट्स ने बच्चों को कहा है कि आप कर रहे हैं और नहीं होना चाहिए. आई वुड से कि हम लोगों की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है. अगर हमारे पेरेंट्स ऐसा चाहते हैं, तो वो क्यों चाहते हैं, वो ही आप इन दी अल्टीमेटली योर पेरेंट्स आर द वन हु कैन थिंक बेस्ट फॉर यू, बिकॉज ऑफ देम यू आर इन दिस वर्ल्ड. तो पीयर, मुझे लगता है कि अपने पेरेंट्स को ही बहुत पॉजिटिव नजरों से देखना चाहिए, जो कि आजकल एस्पिरेंट्स नहीं कर पाते हैं, यंग फेस नहीं कर पाते, बिकॉज ऑफ एज डिस्टेंस एंड व्हाटसोएवर. और पीयर ग्रुप में मैंने ऐसे एस्पिरेंट्स देखे हैं जो पहले स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा फोकस होते हैं, लेकिन फिर वही उनके फ्रेंड के साथ रह के उनका माइंड डाइवर्ट होने लगता है. क्योंकि आप जब एक प्रिपरेशन करते हो, 7 to 8 आवर्स आपको सिस्टमैटिकली बैठ के पढ़ना पड़ता है, आपको आपको सिलेबस कवर अप करना पड़ता है. और वहीं पे जब आप अपने फ्रेंड्स को देखोगे, एंड आई थिंक राजा सर वुड विल एग्री ऑन दिस, कि आपके फ्रेंड्स मस्ती कर रहे हैं, मूवीज जा रहे हैं, तो आप तो प्रेजेंट में हो ना. आप नहीं सोचोगे कि आपको सिलेबस कवर अप करना है, आप उस वक्त सोचोगे कि हाँ मैं भी इसके साथ ज्वाइन कर लेता हूँ. तो आपका तो स्ट्रगल खत्म हो गया. तो आपको अपने आप को इसलिए भी ट्रेन करना है कि व्हाट आफ्टर क्रैकिंग दिस एग्जाम, यू विल हैव फार मच बेटर लाइफ देन whosoever is enjoying their life today. कुछ पाने के लिए मुझे लगता है बहुत कुछ खोना पड़ता है, और जब वो हासिल भी हो जाता है, तब हमें ऐसा फील होता है कि अच्छा इसके लिए हमने इतनी मेहनत करी. तो हमें एक अंडरलाइन एजम्पशन कि ऑनेस्ट रहना चाहिए. ठीक है, तो हम जब ऑनेस्ट रहना सीखेंगे अपने आप से कि हम क्यों चाहते हैं कुछ भी चीज XYZ, और ह्यूमैनिटी और ह्यूमिलिटी, आई थिंक द ओनली थिंग विच कैन मेक अस एंड शेप अस इज दैट ह्यूमिलिटी, a love for others, empathy for others. वो आप अपने आप, वो पॉजिटिविटी होगी, फिर लाइफ में आपके लिए कोई भी कुछ भी प्लान करता रहे, ये प्रिपरेशन करने के बाद आपका क्लियर भी ना हो, फिर भी आपको लाइफ दिखाएगी कि लाइफ में आपके लिए ये स्टोर है. तो ये एक बहुत बेटर वे होता है अपने आप को पॉजिटिव रखने का. अगर शॉर्ट में मैं समझ पा रही हूँ आपकी बात को, तो यू हैव टू ट्रेन योर ब्रेन कि जो आप सोच रहे हो अपने लिए, यू विल बिकम दैट. जैसा आपने अपना ब्रेन आपको इसी तरह से ट्रेन करना है, आपको ट्रेन करना होता है एग्जैक्टली अपने ब्रेन को.